Hey guys, I am back with a new video. Today we are going to start our next topic of chapter number 2nd. This is a part 3 for chapter number 2nd, reproductive health. Today we are going to start our MTP topic. ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term called medical termination of pregnancy or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which accounts 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid this misuse. इसका मिसयूज़ होने से बचाने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया. ठीक है, such restrictions are all the more important to check and discriminate an illegal female fertilicides. जो इलीगल क्या है, अबॉर्शन किया जा रहा है, ये सब इसके लिए. ठीक है, वेट लेट्स स्टार्ट. इम्पोर्टेंस ऑफ एमटीपी. एमटीपी की इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं. टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूजिंग ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स. ठीक है, essential in case where continuation of the pregnancy could be harmful to the mother or the fetus or both. देखो इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कंटेंट. अब फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं अच्छे से बिल्कुल डिटेल हिंदी रीडिंग में आपको प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, व्हेन एमटीपी शुड बी परफॉर्म. कब की जाती है एमटीपी परफॉर्म, टाइम फ्रेम क्या है उसका. MTPs are considered relatively safe during the first trimester. पहले ट्राइमेस्टर में क्या है, सेफ मानी जाती है. मीन्स 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर वेरी रिस्की. बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि उसमें क्या है, बच्चा बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए अबॉर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Problems related with MTPs. Majority of MTP performed illegally by unqualified quacks. जिनको ज़्यादा पता नहीं होता उनके द्वारा ये क्या है, इलीगली MTP परफॉर्म की जाती है ज़्यादातर. मिसयूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक पढ़ा था, है ना. तो उसमें क्या था, एमनियोसेंटेसिस का यूज़ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, जो कि फीमेल फर्टिसाइड्स के लिए ज़्यादा वो है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया. ठीक है, सच प्रैक्टिसेस आर डेंजरस फॉर यंग मदर एंड फीटस. इफेक्टिव काउंसलिंग और द नीड टू अवॉइड अनवांटेड coitus and the risk factors involved in illegal abortion, as well as providing more health care facilities, could reverse mentioned unhealthy trends. ठीक है, let's move ahead. What you need to know right now about MTP. MTP is Medical Termination of Pregnancy. Amendment Act 2017 was enacted by the Government of India with the intention, किस इंटेंशन से उन्होंने ये रखा था, of reducing incident of illegal abortion and subsequent maternal mortality or morbidity. According to this act, a pregnancy can be terminated on a certain considered grounds within first week, मतलब 12 weeks, first trimester 12 weeks of pregnancy, on the opinion of one registered medical practitioner. If the pregnancy was lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioner must be the opinion. उनका क्या है, साइन होने चाहिए, उनका ओपिनियन होना चाहिए, जो भी क्या है, फॉर्म्ड इन गुड फेथ, जिन पे हम विश्वास कर सके. टू
बेस्ट डॉक्टर से क्या है सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ भाई 24 वीक्स है, कोई नहीं, अबॉर्ट किया जा सकता है बच्चे को, ठीक है, ऐसे होते हैं। द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी इन्वॉल्व एज अ रिस्क ऑफ अ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और of grave injury, physical and mental health. There is substantial risk that a child were born. It would suffer from such physical or mental abnormalities. उसमें क्या ये सारे symptoms थोड़े देख सकते हैं as to seriously handicapped. Okay, let's move ahead. Our next topic is STDs मतलब sexually transmitted diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted disease or venereal disease, reproductive tract infection. एग्जाम्पल क्या है? गोनोरिया, साइफल, जेनिटल herpes, क्लेमाइडाइसिस, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, HIV leading to AIDS. HIV means human immunodeficiency virus. ठीक है। बैक्टीरियल एसटीडीज और पैथोजेंस, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग मिस्टेक पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उस पर फोकस कीजिएगा। मेन जो कंटेंट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो निकालिएगा इस वीडियो में से, ठीक है। गलतियाँ मत निकालिएगा, सिर्फ जो समझाना चाह रही हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई सारे होते हैं फालतू के कमेंट्स करते हैं, वो सब मत कीजिएगा, वो एक अच्छे बच्चे की निशानी नहीं होती है, ठीक है। बैक्टीरियल एसटीडीज, गोनोरिया, साइफल्स, क्लेमाइडाइसिस एंड उनके पैथोजेंस के, गोनोरिया के नेजेरिया, गोनोरिया, साइफल्स के ट्रेपोनेमा पैलिडियम, क्लेमाइडाइसिस के क्लेमाइडिया, ट्रैकोमोनियासिस। वायरल एसटीडीज कौन से होते हैं? जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्ट्स, एड्स, ठीक है। पैथोजेंस क्या हो गए? जेनिटल हर्पीस के HSV मतलब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वायरस, जेनिटल वॉर्ट्स का ह्यूमन इम्यून HPV है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ऑन द अदर हैंड एड्स के क्या हो गए? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और नेक्स्ट इज प्रोटोजोल STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ट्राइकोमोनियासिस, इसका पैथोजन क्या है? ट्राइकोमोनियास वेजाइनालिस। हेपेटाइटिस बी एंड HIV आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय, किससे ट्रांसमिटेड किए जाते हैं? अब दिख रहा है कैसे ट्रांसमिटेड किए जाते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड from injected mother to the fetus, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection. Other diseases are completely curable if detected early and that treated properly. देखो, अगर किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी डिसीज़ हो जाती है, उसके इनिशियल डेज में अगर हम उसे कवर अप कर लें तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ उसको उस चीज़ को इग्नोर करके करेंगे तो क्या होगा? वो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वो डिसीज़, और ज़्यादा क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज STDs आर माइनर एंड इंक्लूड itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in the genital region. Infected female may often be asymptomatic. Later complications: pelvic inflammation, disease, ectopic pregnancy, cancer of reproductive tract. All the persons are vulnerable to STDs. These are very high among people in age group 15 to 24. Stillbirths,
infertility, abortion. Okay, prevention for STDs. Avoid sex with unknown partners or multiple partners. Always use condoms during coitus. In case of doubt, go to the qualified doctor. अगर कोई भी क्वायरी हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ फॉर अर्ली डिटेक्शन, पहले से, ताकि क्या है तुम्हें उसका पता चल जाए और तुम क्योर कर पाओ उस डिजीज़ को, ठीक है। एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट डायग्नाइज्ड विद डिसीज़, अगर कोई डिसीज़ है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लो, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एंड कोहैबिटेशंस। पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं? अब दिख रहा है, पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं? फिजिकल, ड्रग, साइकोलॉजिकल, कंजेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल डिसीजेस, ठीक है। In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. देखो क्या कहा गया है इसमें, मैं कह रही हूँ ना कि अगर तुम ध्यान से शांति से एक एक वर्ड उसका मीनिंग समझते हुए करोगे ना, अच्छे से समझ आएगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ आएगा तुम्हें अच्छे से। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ना कि मोस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि वो बच्चा नहीं दे पाई, बच्चा नहीं होया। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होती है। किस चीज़ की? लो स्पर्म काउंट की वजह से, ठीक है। आपको भी समझना चाहिए ये चीज़। The couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly called assisted reproductive technology called ART, ठीक है। These are of two types, in vitro fertilization and in vivo fertilization, ठीक है। In vitro fertilization, IVF, test tube baby programs, over collected from the wife or donor and sperms from the husband or donor are induced to form zygote, zygote बनाने के लिए, ठीक है। जिफ्ट कॉल्ड zygote intrafallopian transfer, IUT intrauterine transfer. Zift is basically transfer of zygote or early embryos with up to 8 blastomere into fallopian tubes, ठीक है। On the other hand, IUTs मतलब transfer of embryos with more than 8 blastomere into the uterus. Let's move ahead. Intracytoplasmic sperm injection, a laboratory procedure in which a single sperm from male and female partner is injected directly into egg. Then the fertilized egg is implanted to the woman's uterus. क्या होगा इसमें? क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब मेल पार्टनर में अगर लो स्पर्म काउंट है तो मेल पार्टनर से क्या होगा, ओनली वन स्पर्म निकाल कर फीमेल के एग में इंजेक्ट करा देंगे और सीधा उसके क्या है, उसको किस में इम्प्लांट करा देंगे? फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। दिस इज़ हाउ ICSI टेक्निक वर्क्स, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वर्क्स, ठीक है। नाउ वी मूव इन विवो फर्टिलाइजेशन विद इन फीमेल, ठीक है। आर्टिफिशियल insemination technique or gamete intrafallopian transfer. The semen collected from husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina of the uterus. Intrauterine insemination or the female, ठीक है, फीमेल के। This technique is useful for male partner having inability to inseminate female or low sperm counts,
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लो स्पर्म काउंट की वजह से होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कीमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में क्या होगा, कीमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र इज़ अ 3 स्टेप्स प्रोसीजर। इधर क्या होंगे, 3 स्टेप प्रोसीजर होंगे that involves removing of egg, combining them with sperm and immediately placing them in the fallopian tube। क्या होगा, पहले एग को क्या है निकाल के अलग कर देंगे, फिर स्पर्म को निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे एंड इमिडिएटली क्या होगा, fallopian tube में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। वेयर द एग इज़ फर्टिलाइज्ड, आप एग क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। ट्रांसफ़र ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर इनटू द fallopian tube ऑफ अनदर फीमेल, ठीक है। यूज़फुल फॉर फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवम, फीमेल के लिए यूज़ होती है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। लेकिन क्या है, वैसा एनवायरनमेंट कर देते हैं जिससे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन ईजिली हो सकती है और डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स क्या है, लेट्स चेक आउट। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है, समझ आया। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, बहुत बढ़िया स्पेशलाइज्ड जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ही होती है ये सब टेक्नोलॉजीज़। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओनली अवेलेबल इन वेरी फ्यू सेंटर्स, कुछ ही जगहों पे ये अभी अवेलेबल है क्योंकि हाई एक्सपेंसिव है ये। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स, लीगल अडॉप्शन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर दोज कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, अडॉप्ट कर लो बच्चे को, ठीक है। ओके, दैट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। डोंट वरी, आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, डोंट वरी। यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन गेट द PDF फ्रॉम देयर। क्या तुम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी हमने चैप्टर करा है, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में ही कर लेते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, मतलब STDs में से है क्वेश्चन। मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। इनमें से बताइए कौन सा अफेक्ट नहीं करता सेक्स ऑर्गन को। मैं आपको टाइम देती हूँ 5 सेकेंड्स का हर क्वेश्चन के लिए, सो दैट आप टाइम बाउंडेशन का भी ध्यान रखें। जब भी आप, एक मेन पॉइंट बता रही हूँ, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर जब भी पढ़े, टाइम ड्यूरेशन सेट करें, टाइम लिमिट सेट करें और फिर करें, ठीक है। इससे आप पंक्चुअल भी हो जाएंगे, ठीक, और अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और भी एक बार रुक जाओ, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। और क्या है, अगर तुम्हें किसी भी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है, या फिर इसको इतनी देर मत लगाओ, ओनली 3 सेकेंड्स दो समझने के लिए। अगर उसका मतलब आता है तो ठीक है, अदरवाइज गो टू द टॉपिक, गो टू द डिक्शनरी एंड क्लियर योर क्वायरी, ठीक है। और अगर हाँ, अभी हमने पढ़ा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हुई है, आपको इसका आंसर नहीं पता लग रहा है,
So you can check out and go to the topic. क्या है? STD है, तो आप STD वाले पे जाके खुद पढ़ो, उसे समझो, अच्छे से समझने के बाद फिर आओ क्वेश्चन पे, देन आंसर इट। ओके, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट टिप्स थी जो बच्चों के काम आएगी। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देते हैं। पहले टाइम स्टार्ट करने दो। 1 2 3 4 5 टाइम स्टॉप। लेट्स मूव टू द आंसर। आंसर इज सेकंड, एड्स acquired immunodeficiency syndrome caused by human immunodeficiency virus or a retrovirus. Because the lowering of Th cell count, the person become vulnerable to infectious microorganism. A major example of this is tuberculosis. Weight loss also occur in such person. Okay, I hope you will easily understand the concept because we are recently done this topic. Okay, our next question is, in case of couple where a male is having a low sperm count, which of the following technique will be suitable for fertilization? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है इसी लेक्चर में ही। बताइए इसका आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम अप। Let's check the answer. Your answer is option first, artificial insemination. Infertility of male partner can occur due to very low sperm count in the semen or inability to inseminate the female. The artificial insemination technique, these have two steps. The semen of healthy male donor or husband is collected. The semen is introduced artificially into the vagina or the uterus of a female. Okay, let's move ahead. Our third question is, which of the following is incorrect regarding vasectomy? Choose करिए आंसर। Your time starts now. 1 2 3 4 5 time up. Let's check the answer. Your answer is option number 4, no sperm occur in epididymis. Vasectomy is a procedure during which a small incision is made in the scrotum through which vas deferens on both sides are identified. They are then cut, folded, and over tied so that the tubes do not recanalize. Due to this, sperm do not appear in semen. Fertilization does not occur and contraception is achieved. But sperms keep getting produced in the testes. लेकिन sperm क्या है, testes में प्रोड्यूस होते रहेंगे, मैच्योर होंगे एपिडिडाइमिस में, और क्या है, थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, उसके बाद क्या है, एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। कहाँ पे? बॉडी के अंदर। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर वेरी वेल। ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और लेक्चर्स के लिए फॉलो अस, ठीक है, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Our next question is, the test tube baby plan employs which of the following technique? Choose the correct option. Your time starts now. 1 2 3 4 5 time up. Let's check the answer. Your answer is option number first, zygote intrafallopian transfer.
In this process of development of test tube baby program, the fusion of gametes occur outside the body. इसमें क्या है, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज लिखी हुई है, यू कैन ईजली अंडरस्टैंड word by word. If you don't understand or recognize the meaning, then comment me. I will provide you a detailed explanation in Hindi as well. ठीक है? The fusion is performed in petri dish and then after the formation of 8-cell blastomere, which is zygotic stage, it is implanted in the woman. This is called intrauterine transfer, where the zygote is directly introduced in fallopian tube, called zygote intrafallopian transfer, ZIFT. Let's move ahead. Our next question is question number 5. Which one of the following is most widely accepted method of contraception in India at present? ज़्यादातर कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया जा रहा है इंडिया में? आंसर बताइए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1, 2, 3, 4, 5. Time up. Let's take the answer. The answer is option number first, IUDs, intrauterine devices. Contraception, otherwise is known as birth control, refer to any method or technique which prevent pregnancy or conception in female. The best step to overcome high population is to motivate individuals to use contraceptive methods का यूज़ करें. ठीक है. Let's move ahead. Question number 6. The technique called gamete intrafallopian transfer as recommended for those female. Give a correct answer. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time up. Let's check the answer. Your answer is option number first. Who can't produce an ovum? Gamete intrafallopian transfer is a technique used to solve infertility in couples. It involves transfer of ovum, which is collected from the ovary, to the fallopian tube of either same female or the female who can't produce an ovum but can offer appropriate environment for fertilization. Okay, I hope you will enjoy the lecture very well and easily understand every single concept or topics. If not, then comment me. I will provide you a detailed explanation, whether it is video or through comment section also. Okay, let's move ahead. Our next question is question number 7. Which two of the following statements are correct? Give a correct answer. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time up. Let's check the answer. Your answer is option number first. Statement A and C are correct. Medical termination of pregnancy during the first trimester is generally safe. Intrauterine devices like copper T are very effective contraceptive. Generally, chances of conception are nil until mother breastfeeds up to 6 months after parturition. Contraception pill must be started 1 week prior to the coitus to prevent conception. I hope you will easily understand the meaning very well. If not, then comment me. I will solve your query.
Our next question is question number 8. Which of the following is not method of contraception? Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time up. Let's check the answer. The answer is first, pills having estrogen and progesterone is a oral contraceptive pills method to prevent ovulation. और जो और सारे ऑप्शंस थे वो क्यों नहीं थे, उनका भी रीज़न है लाइपेस लूप क्या काम करता है. इट इज़ अ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस विच प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, बचाता है उससे. ट्यूबेक्टोमी इट इज़ अ स्टरलाइजेशन मेथड इन फीमेल in which a removal of short segment of the fallopian tube have been done. Condoms, it is an example mechanical method to prevent fertilization. Okay, let's move ahead. Our next question is question number 9. Progesterone present in a contraceptive pill is meant for. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Let's check the answer. Our answer is option number first. In contraceptive pills, the progesterone is present in progestin, which control or stop ovulation by maintaining the hormone level. Okay, let's move ahead. Next question is question number 10. In the year 2000, India population reached close to the 1 billion mark. Possible for this is decline in. Choose the correct answer. ये वही वाला है जो हमने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में डन किया था ना टॉपिक, उसका हमने डाटा एनालाइज किया था. अगर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा डाटा एनालाइज किया था, सो यू कैन चेक द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 from where we have already discussed the data. Okay, your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time up. Let's take the answer. Answer is option number 3. A, B and D statements are correct. India population reached close to the 1 billion in the year 2000. This is due to decline in death rate, maternal mortality rate, infant mortality rate. Death rate, number of death per unit time. Maternal mortality rate, number of maternal death per 100,000 live birth per unit time. Infant mortality rate, number of infant death per 1000 live birth per unit time. Okay, so our next question is question number 11. The complication of STDs includes. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time up. Let's take the answer. The answer is option number 4. All of the above statements are correct regarding complication of STDs. ठीक है? If STDs are left untreated at early stage, it could lead to complication as follows. किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं STDs? Pelvic inflammatory disease, stillbirths, abortion, cancer of reproductive tract, ectopic pregnancy, infertility. Okay, let's move ahead with the next question. Question number 12. This is a theoretical question, which is what is amniocentesis? State its advantages and disadvantages, if any.
Answer is amniocentesis involves withdrawing some of the amniotic fluid that bathes the developing fetus and ionizing the fetal cell and dissolved substances. Advantage: this procedure is used to test for presence of certain genetic disorder such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus. Okay, next is disadvantage. As it can reveal baby's gender, it being misused to kill the normal female fetus. नॉर्मल फीमेल फीटस को क्या है ये किल कर सकते हैं, इसका मिसयूज कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट इट इज़ लीगली बैंड फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन टू अवॉइड फीमेल फर्टिसाइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन एसेंशियल फीचर रिक्वायर्ड फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. दिस इज ऑल्सो अ theoretical question. Okay, your time starts now. You can pause the video and write your answer. 1, 2, 3, 4, 5. Let's move ahead. Your answer is an ideal contraceptive should be user-friendly, easily available, effective and reversible, with no or least side effect. It should not it should in no way interfere with sexual drive, desire, the sexual act of user. ठीक है. Let's move ahead. Our next question is question number 14. What are the assisted reproductive technology practiced to help infertile couple? Describe any 3 techniques को describe करना है. You can pause the video and write your answer. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time up. Let's take the answer. Assisted reproductive technology are the applications that tackle infertility in couples. Some of techniques are used as follows: test tube baby, gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, artificial insemination. Test tube baby is a term used to refer the baby introduced or produced through artificial insemination or in vitro fertilization called IVF. In vitro fertilization, the practice of fertilizing an egg outside the woman's body, followed by the embryo transfer. In this method, ova from female and sperm from male are collected and are introduced to form zygote under simulated conditions in laboratory. The zygote or early embryos could be then transferred into the fallopian tube, and embryos within more than 8 blastomere into the uterus is to complete its further development. Okay, अगर बैकग्राउंड में कोई शोर आ रहा हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ. ठीक है यार, इंसान है, कुछ तो मिस्टेक हो सकती है ना. नेक्स्ट इज गेमेट intrafallopian transfer of an ovum collected from donor into the fallopian tube. फिर से कह रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान मत दीजिएगा. जो मेन एक्सट्रैक्ट है इस चैप्टर का वो निकालिए और उसको रिमाइंडर रखिए. ठीक है. fallopian tube of other female who can't produce one but can provide a suitable environment for fertilization and further development. Intracytoplasmic sperm injection. It is a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected to the ovum. So in this way we have done our topic.
दिस इज़ अ ब्लैंक स्लाइड फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and follow us for more updates. Okay, PDF will available on the Telegram group. You can join our group. Okay guys, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली न्यू चैप्टर के साथ। मे बी आवर नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिसीज। पता नहीं, ऐसी कुछ था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज था ना, HSD, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। यस, this is our third chapter. In the upcoming video we are going to start our third chapter. So okay, goodbye guys, take care. Okay guys.